सूर्यः शौर्यम् अतीन्दुरुच्च पदवीम् सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुताम् शुक्रः सुखं शं शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु विपुलम् केतुः कुलस्योन्नतिम् नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवतां सर्वे प्रसन्नाग्रहाः आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः। सूर्यः शौर्यम् अतीन्दुरुच्च पदवीम् सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुताम् शुक्रः सुखं शं शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु विपुलम् केतुः कुलस्योन्नतिम् नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवतां सर्वे प्रसन्नाग्रहाः आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः। सूर्यः शौर्यम् अतीन्दुरुच्च पदवीम् सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुताम् शुक्रः सुखं शं शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु विपुलम् केतुः कुलस्योन्नतिम् नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवतां सर्वे प्रसन्नाग्रहाः आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो
Aum bhuh, Aum bhuvah, Aum swaha, Aum mahāvākyā, Aum janah, Aum tapah, Aum satyam, Aum tatsabhiturvarenyam, Bhargo devasya dhīmahi, Diyo yo naha prachodayat. Apo jyotirasomrutam brahma bhuvasvarom. Namaskaram. It is the eclipse, a solar eclipse occurring after 27 years in the Swati nakshatra of Rahu, which is associated with Vayu because of the Tula Rashi that it is in. And you can see the effect of it. Pranayama is very, very powerful during this period. It's only a partial solar eclipse in Bharat, but doesn't matter. Wherever on earth you are, the very fact that we have a solar eclipse, meaning the moon's shadow on the sun, means that during this period you will see the effect of an entire month taking place within these few minutes of the eclipse. So in other words, all of Padyam, Dvitiya, Tritiya, Chaturthi, Panchami, Shashti, Saptami, Ashtami, Navami, Dashami, Ekadashi, Dvadashi, Trayodashi, Chaturdhashi, Paurnami, again repeating the whole 14 phases and ending with amāvasyā. These 30 tithis and the 27 nakshatras are all occurring within this short period. In other words, it's a fast forward, it's an accelerated motion, and everything ages with that. Many of us are not sensitive to this, but those of us who are sādhaks, who are seekers, are sensitive to this, and therefore the importance of chanting during this period. Since Tula Rashi and Swati Nakshatra, where the sun, moon, and Ketu conjoin with the aspects of Shanaishchara from Makara and Rahu from Mesha, and Shukra, the owner of Tula, also occupying the same house, it is a wonderful combination. And in fact, the exalted Mercury in Virgo, Kanya, is going to move soon to Tula as well. So nothing like this for chanting. So enough of discourse. Let's get on to business. Om Shri Rama Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanumān Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Rama Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanumān Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Rama Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanumān Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Rama Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanumān Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi
जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयमात्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयमात्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयमात्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयमात्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयमात्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयमात्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयमात्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयमात्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयमात्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयमात्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयमात्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयमात्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयमात्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयमात्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयमात्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयमात्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयमात्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयमात्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयमात्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की।
I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Ram Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Ram Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Ram Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Ram Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki. I am Atma Brahma Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Ram Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Ram Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Ram Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Ram Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Ram Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Ram Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Ram Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Ram Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Ram Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Ram Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Ram Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Ram Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Ram Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Ram Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Ram Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Ram Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Ram Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Ram Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki. Om Shri Ram Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapran Ki.
ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की।
अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मनो बुद्धि
जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मानो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मानो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मानो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मानो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मानो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मानो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। ओम श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अयम आत्मा ब्रह्मण काया मानो बुद्धि जय बोलो महाप्राण की। There would be astrologers who would be painting a doomsday picture for many people when these kinds of occurrences, natural occurrences, are there, like eclipses, which are so common. You'll find at least 2 or 3 every year. And they would scare people away with of different nakshatras and different rashis, saying all kinds of problems that they would be facing. But for seekers, for sādhaks like us, every moment, irrespective of what natural occurrences are happening around us, is an opportunity. For those of us who see the positive side of it, what we can do in a situation, every moment is auspicious. There's no moment that is bad, because time is something that goes on cyclically, and we need to take advantage of all situations. Awareness, or sensitivity rather, or clear perception of what is happening around us is important. We cannot be divorced or completely in an island, separate from what is happening around us, especially in the immediate neighborhood of the solar system. The moon represents our mind, and the sun represents our soul or atma. And every amāvasyā, which happens every month, the new moon, is a situation where the mind can integrate with the atma, that is our self. Such opportunities have to be utilized. So what is special about a grahana? A grahana also always occurs either on a full moon, if it's a lunar eclipse, or on a full new moon, if it is a solar eclipse like today. And it could occur in different zodiac signs depending upon where Rahu and Ketu are, which are nothing but the intersections of the ecliptic, that is the sun's apparent path around the earth and the moon's orbit around the earth. The northern and southern nodes are called Rahu and Ketu. So the union of either Rahu or Ketu with the sun and the moon essentially means that it's not just our mind coming into contact with our self or atma or soul, but also with either the imagination, which is Rahu, or with our mysticism, which is Ketu. And today what is happening is, in Swati Nakshatra, we have Ketu, that is mysticism. So it's an even greater opportunity. Yes, obviously, Rahu and Ketu are always 180 degrees apart, and therefore there will be an aspect of Rahu on the eclipse. And same way, because Shaneshwara is in Makara or Capricorn, a 10th house aspect, which is also a full aspect of special aspect of Shani, will fall on this, which is essentially giving us
patience and imagination, if we take it in the positive side. But those who are typically materialistic and worldly would instead think of imagination as a serious problem of illusion and patience as a serious problem of so much to wait. And that is essentially the difference between a seeker and a non-seeker. But a seeker is not the end point, it is the beginning point to become a seer, to become a rishi, to become a maharishi, and to spread that wisdom and knowledge to the rest of the world. And that's what Dīpāvali is also about. A Deepa, a light, once it comes into a dark room, it leaves no darkness around. And it can spread from one lamp to another lamp to another lamp, which is what we call as a row of lamps. And a row is called Avali. And Dīpāvali is what we are celebrating through these 5 days. We have separate videos on each one of these 5 days. But this particular year, 2022, was even more extra special because after 1995, after 27 years, for the first time, it's happening that Dīpāvali is coinciding with the Surya Grahana or solar eclipse. In fact, the amāvasyā just finished and then the Surya Grahana started. So it's not actually happening simultaneously in that sense. So that's the reason why it's also a partial eclipse, though in some other parts of the world it would be a full eclipse, a total eclipse. In any case, we took full advantage of this hour of the Grahana and through the chanting, because any chant which is performed, not the specific ones that I did, but any chant that you do during any Grahana in the future also, because as I said, there are 2 to 3 Grahanas every year. So utilize that Grahana period, fast before that, which is what I did. And because as I said, everything ages faster. Within a few minutes, 1 month gets over. So it's okay for us who probably live for a few years. It may not appear like a long time or 1 month. But for food, 1 month, even if you keep it in the refrigerator, you know how bad it goes. So that's the reason why it's very important you do not put your food into your stomach, because the temperature inside, is quite high. It's almost like summer inside. So in summer, foods rot much more quickly, which is why we advise fasting during the Grahana, in fact, many hours before, so that you're on an empty stomach during the Grahana itself. And it's very, very lucky that we have been able to perform this particular chant of Hanumān, because he's Vayu Putra. And as I said, Tula Rashi is associated with Vayu. It's one of the airy zodiac signs, one of the 3 airy zodiac signs. The other 2 being Aquarius or Kumbha and Gemini, or what we call as Rishabha. What do you call? I forgot what we call Gemini in Sanskrit. But essentially, these are the 3 signs, and therefore these 3 signs are where the effect is maximum, the Aries signs, because of the fact that the Grahana is occurring in the Tula Rashi. But the effect for seekers is always positive, because we utilize this moment for our spiritual sadhana. So I hope you enjoyed this short video. I'm very sorry for the very short notice. I hadn't planned this, so suddenly it occurred to me, since anyway I'm going to be, yes, thank you, Mithuna Rashi, thank you Vijayaji for mentioning that Mithuna Rashi is what we call Gemini as. And so we really utilize this particular period of time, and you will see the huge effect of it. It's an amplifying effect. Any mantra that you say during this period is equivalent to saying it 1008 times. So that is the kind of amplification it gives. Why? Because a few minutes gets amplified into a month. So you can see then anything that you do within a second gets amplified into 1008 seconds. So that's the kind of amplification you have, and which is why I thought we should take advantage of this. But let this not end with this. We will take advantage of this going forward as well. This particular mantra is not only important because Hanumān is Vayu Putra and this is associated with Vayu, but because this famous bhajan of
Om Shri Rama Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanumān Ki, I have added to it a rhyming sentence, I am Atma Brahma. What is that? It is one of the 4 mahāvākyas. Prajnanam Brahma, Tattvamasi, I am Atma Brahma, Aham Brahmasmi. These are 4 important sentences which come in 4 different Vedas, and these 4 are all in Upanishads. So in other words, this most profound knowledge of the Vedas is Vedanta or Upanishads, and in the Upanishads the most profound are these 4 mahāvākyas. And I am Atma Brahma means that this Atma, I am means this. I am Atma Brahma means that this Atman is Brahman. There's no difference between Atman and Brahman. They are one and the same. And we are not the body, the mind, and the intellect is what I'm trying to say through this additional line that I have. I am Atma Brahmana Kaya Mano Buddhi Jai Bolo Mahapraniki. Na Kaya means not the body, not the mind, Mano, not the Buddhi, the intellect, but we are beyond that ourselves. And so let this not be just a bookish knowledge, let this not be a hearsay, but let this be cultivated in our daily experience, moment to moment, and the way we feel within us and how we interact with others, to spreading that row of lamps amongst everybody. Namaskar, Jai Hind.